दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। In 79th Independence Day announcement, Prime Minister Narendra Modi described the GST reforms as a Diwali gift for the people, one aimed at reducing the tax burden on the common man. 8 years since the rollout of GST in 2017, the government is now preparing to update it with a new 3-pillar framework. Let's break down the 3-pillar reform plan. Pillar 1. Structural reforms. This includes fixing inverted duty structures, resolving classification disputes, and ensuring predictable tax structures. That means fewer mismatches and less litigation. Pillar 2. Rate rationalization. Here, the goal is to lower GST on common use and aspirational goods, with a focus on reducing slabs. The government is moving toward a simpler two-rate system, standard and merit. Pillar 3. Ease of living. This will benefit small businesses and startups. With pre-filled returns, easier registration, and faster refunds, compliance will become smoother and quicker. So, what does this mean for you? Heavy checkmark daily use items are likely to become cheaper. Heavy checkmark MSMEs get relief with simpler compliance. Heavy checkmark exporters can expect faster refunds. Heavy checkmark students, women, farmers, and the middle class stand to benefit. The centre says these changes will support domestic manufacturing, reduce tax credit backlogs, and boost consumption, making GST more citizen and business friendly. The blueprint has been sent to the group of ministers and will be discussed in the upcoming GST Council meeting. The government aims to implement the reforms before Diwali, making this festive season not just brighter, but also a bit lighter on your pocket. A leaner, simpler GST could be just around the corner. Will it deliver on the promise? All eyes are now on the GST Council's next move.